Here we are going to discuss the development of atomic model in short. First it was given by the Dalton, then Thomson, then Rutherford told that nucleus will be at the center, heavy, and the electron is negative is distributed around that. Then Bohr, when given the fixed orbit atomic model, that model explained the hydrogen atom well, hydrogen spectra, but could not explain the hydrogen-like atom and also behavior of the atom in the magnetic field. But when Schrodinger given the atomic model, which is the model which is the space belongs to space orbital, that model explained well all the atomic phenomena. So hence here the Schrodinger is the modern atomic model. So what we have been concluded that the so-called atom is nothing but an atomic model which is regularly developed, and the so-called modern atomic model, the current atomic model is this one, means orbital format representation of electron distribution, which is done by the Schrodinger. Okay, now we have to consider only the 1s orbital, only 1s orbital to understand the wave function and our quantum mechanics, what we are going to do. So this is the only 1s orbital, this is the nucleus, and this is the electron cloud of hydrogen atom having the only one electron. Okay, only one electron. So what happened at that time, that Bohr could not explain the magnetic effect on the atom, the so-called Zeeman effect. That means if we have to apply the magnetic field, initially you just recall your plus two things. Hydrogen spectra explained by the Bohr on the base of energy levels. If from the higher to lower it will be transist, then it will give the spectra. That means what we are doing at that time, the hydrogen gas is going to be taken by a container, and when it will be discharged by an electric field, then this type of spectra has been observed. This is the output, this is the experimental result. How somebody has to be give its theory given by the Bohr, that the so-called atomic model is nothing but the nucleus will be here, the electron will be revolved around the nucleus with a fixed orbit, and when electron will jump from the higher to lower excited state, then we can get the so-called spectra. This is the explanation by the Bohr. But however, the Bohr and Sommerfeld also done many work at that time with to the development of the atomic model and explained many experimental results at that time. However, they could not explain the hydrogen-like atoms output. That means if we have to consider helium plus, they could not. This is the hydrogen-like atom, helium plus, but they could not explain properly. And also this spectra, whatever the spectra I am getting due to the discharging of hydrogen gas, this spectra is going to be deviated, or it is giving some another new type of spectra or deviation spectra in the field, in the magnetic field, that you are going to study in your last unit, that is called the Zeeman effect. That means effect of the spectra in magnetic field could not explained by the Bohr. So that things when came out in the experimental results, the Schrodinger developed this atomic model. This model has been explained properly. What exactly this model is telling, that this model is nothing but that we have to consider, suppose 1s orbital, and the electron is nothing but here neither a particle nor a wave. Electron neither a particle nor a wave, but electron have its dual character, that is both particle and wave character, that is represented by the wave function that we have been know. So as it is 1s orbital is one type of sphere type, so it can be represented by the 3D. So this is the representation of the electron wave function inside this sphere. Okay, so एठी कौन करागला ना आमे गोटे मॉडल तैयारी कले 1s ऑर्बिटल रो गोटे मॉडल. तो एई मॉडल को सैटिस्फाई करूची किए ना एई तुमरो वेव फंक्शन टा. जदि सैटिस्फाई करूची
ता माने हबो साई आर टी इंटू डी भी द सो वॉल्यूम सो कॉल्ड वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम और तमे एठी लिखि परिबो dx dy dz लाइक दैट ट्रिपल इंटीग्रेशन शुड हैव टू बी 1 आमे एटा खाली पढिले तो सो कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन बोली कि वर्तमान एई साई एक्सटी टा होची रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस 1s ऑर्बिटल तण कि 1s ऑर्बिटल रे थिबा इलेक्ट्रॉन रो बिहेवियर फिजिकल बिहेवियर बा 1s ऑर्बिटल रहिले तार एनर्जी केते तार मोमेंटम केते ए सब जिंस गुडा को काढिया पई हमु कोन दरकार पइला ना तो स्क्रोडिंजर देइथवा इक्वेशन को ए वेव ए फंक्शन टा जेमति सैटिस्फाई करथवा दरकार पूर्वुर आमे पढिचे आमे जस्ट पूर्वुर पढिचे देखो सेही जिंस सेम जिंस लिखाई छि टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन जेतो पढा हैतला कोन लिखाइतला एट एटॉमिक स्केल स्टेट इट इज स्टेट कहला माने each state means 1s state is represented by one psi individual psi सेमति p यदि p orbital कथा हम चिंता करी p orbital then p orbital also will be represented by another psi p okay so here psi s we can say and its dynamics follows the Schrodinger equation तामाने each state has to follow the Schrodinger equation each state जदि हमें consider करिया 1s state रो जदि वेव फंक्शन psi rt हला एटा 3D हिसाब नै कि psi rt कली बा ताको आउथरे कर देली psi srt which is represent the 1s orbital it has to follow the Schrodinger equation तनको Schrodinger से तो एमिता ओटे इक्वेशन देले ए जो टाइम डिपेंडेंट Schrodinger इक्वेशन न पढाई छै टाइम इंडिपेंडेंट भी पढाबो टिके जस्ट मॉडिफिकेशन है कि अछि ता माने स्क्रोडिंजर जो वेव जो डिफरेंशियल इक्वेशन देले जोटा कि आमे डिस्कशन करछन कहा पई फ्री पार्टिकल पई कोन बाहर करछंती टाइम डिपेंडेंट रो ए दिटा इक्वेशन को दे हैव टू द वेव फंक्शन हैव टू ओबे दिस टू इक्वेशन ओके सो हियर इन योर प्रॉपर्टीज व्हाटएवर वी हैव बीन रिटन दैट also some books they have been written that so other books also have been written that the wave function properties one of the properties that they have to obey or follow the Schrodinger equation so in your property fourth number property एठी ऐड कर देले भी चलिबो एमती ऐड कर देले wave function have to satisfy superposition principle also obey or follow the Schrodinger equation okay आमे बुझी पाइले एठी जे Schrodinger equation को से wave function ता भी obey करूथिबो तार one of the properties बुझियला ओके तो इन समर रे टिके आउथरे इन शॉर्ट रे कह दोछि एटॉमिक मॉडल एटम कहले किछ सेमति नाही एटम कहले गोटे मॉडल से ईयर बाय ईयर सेटा डेवलप हे वर्तमान एटॉमिक मॉडल जोडा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल होछि एटा स्क्रोडिंजर्स एटॉमिक मॉडल रे वेव फंक्शन कंसीडर करा जिवो जो पार्टिकल ता हम कंसीडर करिया से पार्टिकल वेव फंक्शन एटा 1s कहले स्टेट प्लस पार्टिकल मिसी की एटा टोटल होची सिस्टम तेणु एई सिस्टम रो बिहेवियर माने इलेक्ट्रॉन रो मोमेंटम केते एनर्जी केते एस ऑर्बिटल रे किबा एस ऑर्बिटल लु से पी ता तो एमती थिबो ना एठी डम्बेल ते पी ऑर्बिटल को गला पुनी पी ऑर्बिटल पुनी तळ को माने ता लोअर ऑर्बिट को आसिले से जो तार स्पेक्ट्रा गुडा देला से गुडा भी एक्सप्लेन कला प्लस एई मॉडल ता कोन कला ना मैग्नेटिक फील्ड रे थिबा जीमान इफेक्ट भी एक्सप्लेन कला तो एई मॉडल ता वर्तमान भिन्न सब प्रकार रो एटॉमिक मॉडल बा एटम बा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड रो जते प्रकार फिजिकल फेनोमेना को से एक्सप्लेन करि पारुची तो स्टैंड बाय हे कि वर्तमान सुदा अछि तेन वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेड और नॉर्मलाइज्ड आम सेतोल कया केतबळे ना सेटा जेतबळे गोटा सिस्टम को ओबे करूथिबो गोटा सिस्टम को ओबे करथवा ना जदी एटा मु सिस्टम नेबी एटा हला तुमरो 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन 1s ता हला तार स्टेट तल एटा जदी इक्वल टू 1 हला ताहले मु कहि परिबी द सो कॉल्ड वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड 1 हेले नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हला प्लस एटा स्क्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी ओबे करूथिबो ता माने स्क्रोडिंजर इक्वेशन रे पके देले सेटा सैटिस्फाई हे जाउ थिबो एम्ति सैटिस्फाई हे जाउ थिबो।